जिसे बोलते हैं, very evil stuff. बहुत ही शैतानी ताकतें। I was involved in very dark things. और मैं बहुत सारी अंधेरी ताकतों में था। It was not good. वो बिल्कुल ठीक नहीं था। It brought much depression into my मेरे life. जिसमें बहुत सारी डिप्रेशन आ गई। You know, it says in the scripture, ये बाइबल में बताया जाता the है, effects or the fruit जो इन फलों का जो असर होता है, of witchcraft, ये जादूगरी का, of occultism, occultism का, of meditation, of yoga, meditation and yoga, is depression, ये डिप्रेशन, undiagnosable sickness, और जिनका कोई इलाज ही नहीं पता लगता, poverty, गरीबी, and suicide. and suicide. That's what the Bible says. ये बाइबल कहती है। Those who are involved in idolatry, जो बुत परस्ती में फंस जाते हैं, and worshiping idols, जो बुत परस्ती मूर्तियों को पूजते you हैं, bring great destruction into your life बहुत सारा अपने पर नाश लेके आ and जाते into हैं, your family. और अपने घराने में Poverty, गरीबी, depression, डिप्रेशन, constant sickness, बीमारी लगातार, and even suicide. यहाँ तक कि आत्महत्या। That's what the Bible says. ये बाइबल कहती है। So we need to make sure we do not go near that stuff, तो हमें देखना है कि हम इसके नजदीक ना and that our जाएं, family does not go near it. और हमारी परिवार भी उनके नजदीक नहीं जाने चाहिए। So there I was growing up in Long Island. तो मैं यहाँ लॉन्ग आइलैंड में In New York. पढ़ता था, न्यूयॉर्क में। I went to school in Florida, मैं फ्लोरिडा में स्कूल and then गया। after I graduated, जब मैंने ग्रेजुएशन I करी, came back to New York, मैं न्यूयॉर्क आ गया। and I worked in an accounting firm in New York City. मैं अकाउंटिंग फर्म में काम करने लगा But न्यूयॉर्क at सिटी में। night, लेकिन रात को I had a hidden life. मेरे पास एक अपना अंधकारमय जीवन था। I was a psychic and a medium मैं जादूगरी किया करता था, and crystal ball reader. क्रिस्टल बॉल में पढ़ा करता था। And I used to go into trances and seances, मैं ट्रांसेस एंड सेंसेस में जाया करता था। all kinds of stuff at night. हर तरह की बातें ये थी। I went over to करता था। Switzerland. मैं स्विट्जरलैंड चला When I गया, came back from Switzerland, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड से आ that's गया when I met this group in New York City. जब भी मैं न्यूयॉर्क सिटी में इस A ग्रुप से man मिला, sitting on a bench जो आदमी बेंच पर with बैठा a हुआ था, long beard, लंबी उसकी दाढ़ी थी his hair in a knot. और उसके He सर was पे जुड़ा wearing था, this blue dhoti, नीली धोती पहने हुए था, and he had people all around him. और उसके चारों तरफ आदमी बैठे हुए And थे। I went up to him, और मैं उसके पास गया, and he was Mona, he was silent, वो मौन व्रत धारण किए हुए था, but he spoke in a hand language. लेकिन साइन लैंग्वेज में बातें करता है, इशारों And के that साथ। was my introduction वो मेरा उससे मुलाकात हुई to Hinduism, हिंदुइज्म to से, yoga, योगा, meditation, मेडिटेशंस। and a man in India A man in India named Satya Sai Baba. नेम सात्या साई बाबा। There is in India this day वो आज भी हिंदुस्तान a में है। man named Satya Sai Baba. उसका नाम सत्य साई बाबा है। It means in English, उसका इंग्लिश में मतलब है mother, father of all truth. माँ बाप सच्चाई के लिए। Sai Baba doesn't claim to be Jesus. उसने अपने आप को यीशु मसीह नहीं कहा, He claims to be the one who sent Jesus to the उसने कहा मैं earth. वो हूँ जिसने यीशु मसीह को जमीन पर भेजा है। So he says that he is God तो उसने himself. कहा कि मैं ईश्वर हूँ। What a lie कितना बड़ा झूठ for है a man to say that he is कि God. आदमी कहे कि मैं इतना बड़ा मनुष्य कहे कि मैं खुदा हूँ। And yet he's got over 20 million Hindu और followers. उसके बाद about 20 million हिंदू फॉलोअर्स And हैं just in India. सिर्फ हिंदुस्तान And में, then thousands and thousands of Westerners और हजारों हजारों वेस्टर्न कंट्रीज में believe that he is God. कि वो विश्वास करते हैं कि वो खुदा है। A lie of the devil. शैतान का बड़ा झूठ है। Well, I ended up going to India. I went to India, मैं हिंदुस्तान गया, and I spent my first 6 months with Sai Baba, 6 महीने में साईं बाबा के साथ traveling रहा, all around, सब तरफ घूमता having रहा, darshan every day, हर रोज मैं उसके दर्शन करता था, and being cleansed of my past, और मैं अपने पुराने जन्म को trying धोता to था, get free of karma, और कर्मा से छुटकारा trying लेने to के get लिए, to moksha, मोक्षा पाने के लिए, and trying to have shanti, peace in my life. शांति पाने के लिए अपने जीवन And में। I thought it would happen by meditation. और मैं सोचता था ये मेडिटेशन से But होती है, actually, I was just disassociating. लेकिन मैं अपने आप को अलग I कर was रहा था, putting my mind to sleep. मैं अपने दिमाग को सुला देता था, I wasn't getting free of anything. और मैं किसी बात से भी I आजाद was नहीं हुआ, getting deeper and deeper into darkness मैं अंधेरे अंधेरे में धंसता जा रहा था, and more possessed by demonic और बहुत spirits. सारी शैतानी ताकतें मुझ में आती जा रही थी। After 6 months with Sai Baba, 6 महीने I साईं बाबा के traveled साथ around रहते थे, India, मैं हिंदुस्तान में to other गया gurus. और गुरुओं के पास I गया, became an ordained Swami, मेरे को उन्होंने ऑर्डेन स्वामी बना दिया, and I received Shaktipat. और मुझे शक्तिपात मिल गया, I had hands laid on me, मेरे हाथ ऊपर रखा and I गया, had a transference into my body और मेरे जिस्म में आ गई of a demon called Shakti.
उसे डीमन जैसे शक्ति बोलते हैं, शैतानी This ताकत को। spirit started to possess my body, और मेरी बॉडी को ये my spirit mind, मेरे दिमाग को कंट्रोल my करती थी, thoughts. मेरे विचारों को It कंट्रोल started करती to थी। take control of me. उसने पूरा मेरे ऊपर It कंट्रोल कर would लिया pull me around, और मुझे हर जगह खींच even के with ले my जाती थी। eyes closed. मेरी आंख बंद रहती थी और ले जाती This थी। spirit would just pull me everywhere. ये आत्मा मुझे हर जगह खींच के ले It जाती took थी over my mind and thoughts. और मेरे थॉट और दिमाग को ले I लेती थी started to get possessed with Shakti. और मेरे पास ये मैं शक्ति से भर गया। I thought it was a power. मैं सोचता ये ताकत, I thought it was an energy from God. मैं सोचता ये एनर्जी खुदा But it was not शक्ति from है, God. लेकिन खुदा की तरफ से नहीं था। Shakti is not from God. शक्ति खुदा की तरफ से नहीं Shakti है। is not the Holy Spirit. शक्ति इज नॉट, होली स्पिरिट नहीं है। Shakti is a lying devil. ये तो झूठ बोलने वाली It's a ताकत है, demon ये शैतानी है that comes and possesses your body. जो कि आके हमारे जिस्म में हमको कंट्रोल And I करती है। got filled with this demon. और मैं इस दुष्ट आत्मा से भर गया। I came back to the United States मैं न्यूयॉर्क में आ गया, from India, हिंदुस्तान and से, I went upstate New York और मैं न्यूयॉर्क चला to, गया। to an ashram, मैं एक आश्रम में a चला yoga गया, monastery, योगा मॉनेस्ट्री, and I spent a year and a half और मैंने कम से कम 1.5 साल लगाया उसमें। silent without talking, मौन धारण करे बगैर learning बोले, a sign language साइन लैंग्वेज मैंने and सीखी meditating और मेडिटेशन करने and लगा learning to get rid of my mind, और मैं कोशिश करने लगा अपने दिमाग से to खाली होने के लिए, destroy my personality, तो अपने आप को खत्म करने के लिए। and allow this spirit of Shakti to rule my और life. मैं चाहता था कि शक्ति मेरे आके मेरे ऊपर कंट्रोल करे। I had no thoughts anymore. मेरे पास कोई सोच शक्ति I नहीं could थी। sit on a bench for 10 minutes मैं बेंच पर 10 मिनट बैठ सकता था, without even a thought going through my mind. कोई सोच मेरे दिमाग में नहीं आता था, No one was home. कोई भी घर पे नहीं, I was empty. मैं बिल्कुल खाली था। And Shakti pulled me down to New York, और शक्ति मुझे न्यूयॉर्क ले गई, to New York City, न्यूयॉर्क to सिटी में, Long Island, लॉन्ग आइलैंड। and I started having my own groups. मैंने अपना ग्रुप शुरू कर दिया, And people would come. लोग आते थे, I would teach them मैं meditation. उनको मेडिटेशन I सिखाता would था, teach them yoga, मैं उनको योगा सिखाता था। and we would have satsangs. हमारे पास ये सत्संग हुआ Many करते of थे, them. बहुत सारे People would come from far away, लोग बहुत दूर दूर से आते थे, and basically I was getting them to still their mind, और मैं उनको यही सिखाता था to कि empty out अपने their आप को mind, खाली कर लें, अपने दिमाग को खाली empty कर out their लें, thoughts, अपने विचारों को छोड़ empty दें, their body, अपनी बॉडी को खाली so कर that दें, I can put this spirit ताकि मैं inside of ये them, आत्मा उनमें डाल सकूं, so that Shakti can possess them. तो शक्ति उनको भी पोजेस करने People में आ thought जाए। they were having a high experience, लोग सोचते थे उन्हें बहुत अच्छा उन्हें तजुर्बा but हो all रहा है। they were doing was getting possessed by a demon. सिर्फ यही हो रहा था कि वो दुष्ट आत्माओं से भरते जाते थे The spirit of Shakti was coming into other people's और bodies. औरों के लोग जिसम में भी ये शक्ति आती जाती थी, And I was teaching people how to get it. और मैं लोगों को सिखाते थे कैसे ले सकते How हैं। evil, कितनी बुरी बात how थी, bad कितना बुरा था ये to go out and teach people कि लोगों को ये सिखाना to open themselves up to a demon कि डीमन के लिए अपने आप को खोल दो so that a demon would come inside of ताकि them. दुष्ट आत्माएं तुम्हें भर जाएं। That's not a good thing to do to people. ये बहुत बुरी बात थी, But I thought I was doing something very लेकिन special. मैं सोचा था कि बहुत ही I thought I अद्भुत was कार्य a करता हूँ। divine मैं incarnation. सोच रहा था बड़ी आत्मिक बात कर रहा हूँ, But I was just getting very deceived by a devil. लेकिन मैं बड़े शैतान के धोखे में था। Started traveling across America. अमेरिका में मैंने चलना शुरू कर We had दिया, a bus बस हमारे and a पास थी, van and cars. वैन और कार हमारे And पास many थी। people would quit their jobs. बहुत से लोग ने अपने काम छोड़ दिए And they would come and join our और family, हमारी फैमिली को ज्वाइन करना शुरू join कर my दिया, group. ग्रुप ज्वाइन करना And शुरू as कर we दिया। went across the country, जब हम जा रहे थे across down the to country, Texas, टेक्सास जा रहे थे, down to Mexico, मैक्सिको, and spent many months in Arizona. बहुत से महीने हमने We एरिज़ोना would में बिताए। drive up to a park, हम एक पार्क में चला and I रहे would थे get out of the bus. और मैं बस से बाहर I would निकला, be wearing these long white robes, मैं एक सफेद लॉन्ग and I had पहने हुए था long hair और मेरे पास लंबे बाल and a थे beard, और दाढ़ी थी and I would go into the park, और मैं पार्क में and I जाता would था sit on a bench, और मैं बेंच पे बैठता and था people would come from all over और लोग हर जगह तरह से to आते थे, see हर this तरह से आते holy थे man कि एक पवित्र आदमी को देखने that के was लिए sitting in their park, जो उनके पार्क में बैठा in a हुआ था bench. बेंच पे। They thought I was a holy man. वो सोचते थे कि मैं बहुत पवित्र, I thought I was a holy man. और मैं भी सोचता था मैं I बहुत wasn't होली holy. मैं I was पवित्र